Hey guys, so today we'll be discussing the question called reverse nodes in a K group. So let's get started. So I don't want to waste much of your time. Let's say that you're given some nodes. Let's say A, B, C, D, E, F, and G. Okay. Now what can eventually happen over here is that key you have to reverse this group. So first, let's say that K is given as 3. So you reverse in an order of 3. And the thing over here is that after reverse, since this is the last element over here, G, since it does not form, the group size is what? 1. So we cannot reverse it. Hence, there will be no reverse operation carried out for this. Now, what will eventually happen for other elements? Let's say that C will be reversed in this order. C, B, A. This becomes one thing. Post that, the see, A was the first element over here. Now A becomes the last element. Notice this thing, okay? Now next what happens that we reverse the second group. Now after reversing the second group, F will come here, E will come here, and D will come here. Right now. So after reversing this, we connect all the elements, and this is the final answer we have to return. Right? So first thing over here, I will ask you a very simple question. How many iterations, how many reversal do you think will happen? I'm talking about like एक ग्रुप ये हो गया दूसरा ग्रुप ये हो गया है ना so how many groups are we eventually reversing we are reversing 2 groups and how we can eventually find out we can just basically count the number of nodes let's say the number of nodes is how much 7 so we know that ki 7 divided by 3 is what 2 because we are taking the floor of this so this will come to and we know that we have to do the reversal operation in only 2 times this is very much clear now I will take you to a very simple thing which is how does a linked list reverse so if you guys have not studied that I will first recommend that you watch some videos on that and then come back to here so let's say what eventually happens over here is that we have a previous which points to null है ना I am denoting it p previous with p and we have a current now what eventually happen is that at each iteration what you do is that you do current का next uh, and to the previous and you also store the जैसे कि a का तुम next information manipulate कर रहे हो ना so you're manipulating the information of a dot next so you have to store that into a temporary variable है ना so that is the basic of the reversal but I do not want to discuss all those but eventually what happens is that कि after doing the first reversal previous comes at this point and b comes over here okay current comes over the b now let's keep on doing that again we will do a reversal so now at reversal our previous will come at this point and the current will be at c and again a final reversal will happen now at the final reversal what will happen is that previous will be pointing to c and the current will move to the next element with c is pointing it might be d something so our current so let me take a different color to denote the final value okay let's use a orange color so previous तुम्हारा c पे आ गया था and जो next है the next element over here it will point to the current so let's say that c was pointing to d so d will now become your current है ना so we have successfully completed our reversal okay but notice guys notice one thing over here eventually what was happening was that कि let's say that a was the head element एक तुम्हारा head element बन गया but now it becomes the tail over here so what it shows us that before we start our reversing we need to store this information I will tell you why so let's say that we store the before we begin our whole process of previous current let's say that we store the information of tail in a we store that information after that what happens is that now you need to connect all the remaining thing है ना now you need to reverse this part as well so what you will do you have to come देखो तुमने ये ग्रुप को रिवर्स किया राइट नाउ इट्स नॉट कनेक्टेड बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा सो राइट नाउ इट्स नॉट कनेक्टेड है ना because we have just come over here we have not connected b with anything so what will eventually happen is that we have to connect this tail to the next element which is our current ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दो कि देखो before starting the iteration we store the tail value why because after completing the iteration हम लोग के पास information नहीं रहेगा ये वाला है ना so what we eventually need to do over here is that tail dot next will be equal to current है ना कायदे से करंट इधर आ जाएगा
तो you might be asking, hey Aniket, this will be that, won't this be confusing? Because right now it will point to D. I'm saying that it's fine. I'm saying it's fine because what we have to eventually do is that we have to reverse this part. We have to reverse this part again. So when we reverse this part, we will get FED. है ना? अभी बात आता है कि how do we manage out? How do we manage out? So let's again understand what we have done. We have first reversed the group 1 and we say that कि A को next element point कर दो. Tail dot next points to current. यहाँ तक तो कहानी सिंपल है. Now we say that कि in the next iteration we will handle the again the reversal of that. But right now let's just take care of the current one. So देखो अब current में क्या होगा कि whenever okay, I will give you one more hint. Whenever you're dealing with such questions, always try to understand that we are using a dummy node. Dummy node is a secret trick in all the linked list question, which is very handful. I will tell you why also. So let's say that we created a dummy node to store the information of the newly formed linked list. So the dummy node का जो next होगा, ये group end होगा एक, है ना? इसका भी group end होगा. तो इसका group end dot next क्या हो जाएगा? Group end dot next क्या होगा? It will point to C. So right now what we can eventually do is that कि it will point to C. We can say that कि group end का next will point to C. ये हमारा बन गया head. तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले डमी नोड क्रिएट किया और हमने क्या बोला, एक ग्रुप नोड को डमी की वैल्यू असाइन कर दी. अब हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप नोड जो ग्रुप एंड है उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस. देखिए प्रीवियस क्या था, इधर सी, हमने इधर से सी निकाला था एंड उसको सी असाइन कर देंगे. अब हर इटरेशन में आपको यही चीज करना है ना, आपको यही चीज करना है. तो अब मान के चलीजिए कि देखिए ग्रुप एंड का नेक्स्ट क्या हो गया, सी, और हमने इसे डिनोट कर दिया. और ये कब कीजिएगा, जब आप रिवर्स कर देंगे. आप रिवर्स करने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. मतलब रिवर्स आपने सी भी किया, फिर आपने बोला कि देखो अब मैंने रिवर्स कर दिया. आई विल से दैट कि द ग्रुप एंड नेक्स्ट विल पॉइंट टू सी, बट नाउ इट्स टाइम टू अपडेट अ ग्रुप एंड ऑल्सो. क्योंकि अब तुम्हारा ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, खुद ही सोचना. अब तुम्हारा ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, टेल पे खत्म हो रहा है ऑब्वियसली. तो तुम्हारा ग्रुप एंड नेक्स्ट क्या होगा, टेल हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई टेल यू हाउ दिस वर्क्स. आफ्टर डूइंग द रिवर्सल यू ऑल्सो अपडेट योर ग्रुप एंड, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप अब कहां खत्म हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ए पे. तो अब भी हम क्या करेंगे, ग्रुप एंड विल पॉइंट टू करंट, which will be our what will be our, sorry, it will point to a tail. Why tail? Can someone tell me that? Because think for yourself that once we reverse it out, a हो जाएगा ना ग्रुप का एंड. ए, देखो पहले ग्रुप का एंड को कोई नहीं था इसलिए हमने डमी से डिनोट किया. अभी ग्रुप का एंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया. तो ग्रुप एंड विल पॉइंट टू टेल, एज सिंपल एज दैट. अभी जो नेक्स्ट इटरेशन होगा वो भी सेम काम करेगा. हमने उसका टेल का वैल्यू, तुम अभी टेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी के इक्विवेलेंट हो जाएगा. एंड उसको हमने फिर से रिवर्स किया, एफ ई डी आ जाएगा. बट अब जब रिवर्स की बात आएगी, रिवर्स में क्या आ जाएगा, अब तुम्हारा ग्रुप डॉट, फिर तुम यहाँ पे कहानी करोगे कि ग्रुप एंड का नेक्स्ट स्टोर करोगे. अभी तुम्हारा ग्रुप एंड का नेक्स्ट क्या है अंदर, तुम खुद ही सोचना. ग्रुप एंड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए का नेक्स्ट. देखो टेल कहां पे था, ये था. ठीक है. अभी हमें क्या करना है कि ए डॉट नेक्स्ट का हमें स्टोर करना है. ए डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब किसको पॉइंट करेगी, प्रीवियस को. प्रीवियस क्या था तुम्हारा, इधर एफ बन जाएगा तुम्हारा प्रीवियस, है ना. तो अभी जब फिर से ये सेकेंड वाला ग्रुप रिवर्स हो जाएगा तो ए किसको पॉइंट करेगा, एफ को इवेंचुअली. एंड हमारा जो टेल है वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा. जैसे कि टेल की वैल्यू तो अभी शिफ्ट तो होती ही रहती है, बट वो होता, सॉरी, व्हाट आई मेंट वाज दैट कि जो ग्रुप की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. तो मैं सिंपल कोड दिखा देता हूँ. हमने एक डमी नोड क्रिएट किया, डमी नोड नेक्स्ट का हेड स्टोर, इट विल पॉइंट टू हेड, फिलहाल के लिए बोल के रखा है. ठीक है. इट विल कम हैंडी बिकॉज वी हैव टू रिटर्न द डमी नोड नेक्स्ट ऑल्सो. जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए ना, ये तो बॉयलर प्लेट मान लो तुम अपना, ये तो सिंपल बॉयलर प्लेट है, कुछ नहीं है इसमें. And finally what we do is that we count the number of total nodes, and after that we know that कि iteration कितने बार चलेगा, count divided by k. फिर मैंने बोला कि previous की वैल्यू स्टोर कर दो और tail की वैल्यू स्टोर कर दो. previous क्या हो जाएगा, ये मान लो कि तुम्हारा जो previous एलिमेंट रहेगा ना, वो स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं. तो जैसे कि मैंने इधर बोला कि ग्रुप एंड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस. ये वाला प्रीवियस है जो तुम अपना रिवर्सल के वक्त, लिंक लिस्ट रिवर्सल के वक्त प्रीवियस यूज करते हैं ना, वो वाला. फिर हमने क्या बोला, रिवर्स करने से पहले हम टेल स्टोर करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप पार्ट कनेक्ट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे कि कनेक्ट द रिवर्स ग्रुप विद द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है.
पहले हमने क्या किया कि ये ग्रुप पार्ट कनेक्ट किया और फिर हमने एक रिमेनिंग लिंक लिस्ट कनेक्ट कर दी ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे। तो मैं अगर सिंपल शब्द में बताऊं तो हमने पहले ये कनेक्ट कर दिया, फिर ये कनेक्ट किया, ऐसे ये ऐसे नहीं, ऐसे कनेक्ट कर दिया, एज सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी। एंड आफ्टर दैट हमने बोला कि ग्रुप का एंड नेक्स्ट टेल पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द रिवर्स नोड्स इन अ के ग्रुप। एक्चुअली ये कोड बेस्ट है, मतलब दिस इज द बेस्ट कोड विच कैन एक्चुअली कम अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज यू विल नॉट इवेंचुअली फॉरगेट अबाउट इट। काफी ज्यादा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, उन्होंने इन डेप्थ गए, बट आई डो नॉट वांट टू गो टू दैट बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्लेन द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। वो क्या करते हैं ना, आपको बस ऐसे रैंडमली बताते हैं कि कोड ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। कंसेप्चुअली सोचना है ना तो आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा। एंड माई होल वीडियो इज अबाउट मेकिंग यू थिंक कंसेप्चुअली। इसका तुम ये रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखोगे तो इट्स वेरी फास्ट सोल्यूशन एक्चुअली। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कितना फास्ट है। सो इट इज 100% फास्ट, सो इवेंचुअली यू कैन कम अप दिस सोल्यूशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू इटसेल्फ। So that's why I'm saying ki do keep following my channel. You will learn more about critical thinking rather than how to code and what are the tricks and tips which can eventually use. So thank you guys.